Let's start. Now this is what we have to do for this lab session. Okay? Again, this isn't something new. We have done it before in the theory part of this course, and this is something very simple. So assuming that you have installed the Octave environment, or if you have MATLAB, that is also fine. But the problem with MATLAB is, one, it is a proprietary software. Proprietary software means that you need to purchase a license for using that software. And the other problem is MATLAB is very heavy. So like it comes on DVDs. So you have to maybe buy it on DVDs, and it would come on 3 or 4 DVDs, something like that. Okay? So it takes around 12 GB space or something like that. So this one, Octave, it is around 244 megabytes, so you can copy it onto a flash drive and you can use it. And the good thing about Octave is that it is compatible with MATLAB. Whatever you do on Octave, you can do the same thing on MATLAB, and you don't need to change anything, so it would work fine. Okay? So if you are learning Octave, you are learning MATLAB. MATLAB is a much more extensive software, and you might need to use it in many different courses. This is not as extensive as MATLAB, but it is good enough for your courses or for your purposes. So what are we going to do in this lab? In this lab, like, we assume that you have the Octave software installed here. Like, we have copied the software, but you cannot install it. Why? Because you have student accounts and it is a limited account. You do not have the privileges to install a new software. Okay, so that is for safety reasons for this particular lab. Now in this session, this is something that we have done, and this is something on which I have assigned you homeworks as well, and this is something on which you had questions in the exam as well. So this is not something new that you haven't done before or you haven't seen before. It is kind of a refresher of whatever we talked about before. But here I would expect that you would basically like master it. You should know these things inside out. Like, you should be very comfortable with it. And in the coming labs, we might be using all these things, and we might not be like specifying or clarifying whatever these things mean. So I hope like you would understand these things. So first of all, like, MATLAB is shortcut for matrix laboratory. So MATLAB is basically everything that you do, all the data. Basically, it is a computer is a data processing machine, and MATLAB is one language which allows you to instruct the computer to process your data. So all the data that you can process with MATLAB or Octave, it is stored in the form of matrices. Internally, it is stored in the form of matrices, rows and columns of data. So any data that you want to process with MATLAB or Octave, it is stored in the form of matrices. So that's why it is a matrix laboratory. Everything is ultimately converted into a linear system or a matrix, and then that linear system is solved, and then you find the solution. So whether you are trying to integrate a function, okay, a definite integral, whether you want to find out the value of a definite integral, whether you want to solve a linear system of equations, whether you want to solve a differential equation or a partial differential equation, okay, so you may talk about these things in the coming classes, in your coming semesters. And in fact, there would be one course on numerical methods or numerical analysis. So in that course, you would talk about these things extensively. And again, you would be using MATLAB in that particular course, and you would have a lab part in that course as well, wherein you would be doing all these things, similar things to whatever we are doing here. But it is not as specific as that course would be. So the point is, any equation, any numerical solution that you want to find out using a computer, that would involve the solution of a linear system of equation. And I hope that you have learned in your FSC and matriculation that when you are trying to solve a linear system of equation, you can convert that linear system of equation into a matrix.
okay, augmented matrix, and then you can use the elimination methods, the Gauss-Jordan elimination, or different techniques that you might have studied or learned. So you can use those techniques to solve that linear system of equation. So the point that I want to make is that whatever you learn here, it is important and it is related to many different courses, okay? And you will come again to this software if you choose to stay in the profession of engineering, or if you choose to go do your graduate studies, MS or PhD, you'll come back again to MATLAB or Octave in some form and you'll be reusing these softwares. So it is important that you master all these things. Now here we'll start with creating vectors. So you should know what a vector is. We have talked about it. We have scalars. Scalar is just one value. Okay, so vectors, they are basically more than one values, more than one component. So in your FSC and matriculation, or in the mechanics course maybe that you're taking in this semester or you have taken in the first semester. So you've talked about forces and vectors and couples and moments, and all those vectors, they had at least like 2 components or 3 components. If you were working in 2D, you were working with 2 components, and those were special components. We call them rectangular components that are perpendicular to each other and that act along the x and y axis. Okay? So those are special components. But a vector can have infinitely many components. Like you can have infinitely many vectors which can add up to another vector. But those vectors, they are not special. They can be any vectors. So if we say something about the components of a vector, and you think of only the x and y component, and like you may get it confused. So you should not be confused about it. X and y components, they are special components. In theory, a vector can have infinitely many components. Okay, so here the vectors we would create, they will not have 2 components or 2 values. This is the x component, this is the y component. They can have n components, as many components as we want. And we can call those components as the components of this vector. Okay, so you don't need to be confused about it. So we'll learn how do you create vectors like scalars. That is easy. We'll talk about that as well. But how do you create vectors? We learn about the colon operator. This is very important, the colon operator. If you use it in Octave or MATLAB and some other languages, I guess Python also has the colon operator, and you can use the colon operator in Python as well. So you should know how to use the colon operator. Colon, those 2 dots above one another. We'll also learn about the linspace function, the linear space function. It is used to create a linear vector, okay, in which all the points are linearly spaced. Or you can divide a straight line into a fixed number of components. You want to say that I have a line from 0 to say 5, and I want to divide it into 100 pieces, equal pieces. So you can do something like that with the linspace function. Then we can create vectors by appending components, okay, by appending or attaching components with one another, or by appending 2 vectors with one another. So you can merge 2 vectors or append 2 vectors and create a bigger vector. You should know how to access individual elements of a vector, and you should also know how to take slices of a vector. So if you have a huge vector, you can take small slices of that vector. So let's get started with this thing, and then we'll go to the matrices part and so on and so forth. So this is how the Octave environment would look like. Again, we have talked about it. This is the very first time when you use it, when you start using it, this is what will appear. Okay, this is the command window. Again, you know about it, but just a repetition, a refresher. Here you can enter commands directly. Those commands would be executed by the Octave environment. Okay, so Octave, as we mentioned, and MATLAB, it is an interpreted language. So we talked about, I guess we talked about compiler as well. So in some programming languages, you write the source code and then you translate the source code into machine code. Okay, so you do the translation and then that machine code is executed by the computer. Here in Octave, we don't do this translation. You write the code and that code is directly executed by this Octave software. This is called interpretation. Like there is no translation step. The translation is on the fly translation.
You type the command and it is translated and executed. There is no separate file or machine code generated. Okay, you just have the script file, and in the script file, whatever commands there are, those commands are directly executed. That is how it works. So here you can enter the commands. This is the workspace window. All the variables, the matrices, the vectors that we create in this session that we are working on, those variables will appear here in the workspace window. This is the command history window. So all the commands that we enter, so they have become part of the command history. So you can go through this history if you want to repeat the commands, your previous commands. This particular area, this shows you your current folder. So the current directory is this particular directory. Okay, so you can change it. What is the significance of current directory? Any script file that is in the current directory, you can directly execute it. But if a script file is not in the current directory and you want to execute it, you cannot execute it directly. Okay, there is another concept that is called the path concept. So a script file, like if you want to execute a script file, you have to type its name here. You have to type its name here. Now Octave needs to know where is that script file. It assumes that it would be in the current directory. If it cannot find in the current directory, then it goes and tries to find it in some other directory. You can specify which directories those directories are, and that you can specify using the property called path. Okay, so let us not talk about that right now. Let us assume that whatever we have, whatever script files we want to execute, those script files, they are in the current directory. You can change the current directory. That we have been doing. For example, in the theory part of this course, we created a directory in the folder Fall 21, Introduction to Computing, and then there was the folder Code. So all the script files that we wrote in that particular, the theory part of this course. So now if you change the current directory, those script files are available here. Now you can execute these script files just by typing their names here. You can type their names, press enter, and all the commands in these script files, they will be executed. Okay, so let's get started. So this is the command window. Let's create another file for this particular course. Okay, so this is not Fall 2021. Let's go to E, and inside E we have the Spring 22 folder here. In here we have Introduction to Computing Lab, and in here we have Scripts folder. Okay, so let's choose this folder. Now in here we have the code from the previous lab sessions. Okay, so it's available here. Now we are not going to go into this code right now. This is for later on, we may discuss it. So right now what we want to do is we want to work with vectors and matrices. Now the first command, again, you know that command. So we want to clear this text that is visible here. For that we have the clear command window, CLC command. So if you type this command, press enter, the window is cleared. Okay, we have another command, clear, CLEAR. So this command basically clears all the variables in RAM that we are using. Right now we don't have any variable. Okay, when we create one, so that variable will appear here. If we want to get rid of those variables, then we can use the clear command. Okay, so first of all, let's start with scalars. This is about vectors, but let's start with scalars. So what is a scalar? So you can create a scalar variable. Variable is a named location in RAM. So a location in RAM where you want to store data, and you give it a name. You use that name in your code. Okay, so in RAM you reserve some space for storing data, and you give that space a name, and you use that name in your in the Octave environment. So you refer to that space or data using this particular name. So this, how do you do that? How do you create a variable? So in other languages like in C, C++, you have to explicitly ask the compiler that I want to reserve
space in RAM for storing data. But in Octave or Matlab, you don't need to do that. You simply say A is equal to, say, 78. Okay, so A is a scalar variable. Why is it scalar? Because we are assigning it one value. We are calling it a scalar, but it is in fact a vector of dimensions 1 by 1. So we created this variable A, we assigned it the value 78, and here in the workspace window you can see that we now have the variable A. Okay, its class or type is double, so it is basically, it can store a double value. Double means double precision floating point value. So this variable A can store a real value, not just integer value, and that real value can have 16 digits, decimal digits after the decimal point. That is what double precision floating point value means. We opposed to this, we have a single precision floating point value. So that can store, say, after the decimal point, it can have 7 to 8 decimal digits. So the double data type, it gives us more precision. You can store more precise values in a double variable. By default, any variable that you create in Octave, it is of type double. And here you can see dimension. Anything that you create here, it is a vector or a matrix. And matrices have dimensions, rows multiplied by columns. This matrix, which we call scalar, it has a dimension 1 by 1. It has a single row and single column. That is what a scalar is, single row and single column. Okay, so this is scalar right now. Say we want to create a vector B. Okay, so you can specify different values for this vector B. How can you do that? So you can specify a list of values. How do you create a list of values? By using square brackets. So within this square brackets, these two square brackets, you can specify what values do we want to store in this vector. So say for example the first value is 4, then space 5, space 9, space 7, space 3, space -7. So you can specify as many values as you want. Okay? Now this would create a row vector. This would create a row vector. So this particular vector would have 1 row and 6 columns. Okay? So its dimension would be 1 by 6. 1 row and 6 columns. And if you see here, like the value that it shows, the values are comma separated. Here we specified space character between two values, and here you can see commas between these two values. Okay, so here also, like, you can specify commas. Like for example, we want to create another vector C, and you can say C is equal to 2, 0, -9, 4. Say for example C is this vector. Okay, so you can specify a space character or a comma character, and this would create a row vector. This would create a row vector. All the elements, you type those elements consecutively. Each element is separated from the next element by a space character or a comma. So this creates a row vector. You can create a column vector as well. You can create a column vector as well. How can you do that? So you can create a column vector like this. You can say D, and again you specify a list of values, but you specify this list by specifying value for each row in a single column. Now you want to specify that these values are going to be in a single column, and you want to specify a value for each row. Here this is a single row, and this is the value for the first column. This is for the second column, third column, fourth column, fifth column, sixth column. Okay? And these values are separated by space characters. Here these are values for a single row. This is the value for the first column, separated by a comma, then for second column, third column. Now in this particular case we want to create a column vector. A column vector has a single column but multiple rows. So you can specify that this value is for the first row, then a semicolon. This value is for the second row, then a semicolon, third row,
then a semicolon, fourth row. Okay. If you press enter, you will create a vertical column vector. So this is a column vector. And here if you see in the workspace window, now we have 4 variables, and if you see the dimension of this one, it is 4 by 1. It has 4 rows and 1 column, and all the values in this column vector, they are separated by semicolons. If you see, if you look at the value here, they are all separated by semicolon. Okay, okay, so this is how you can create a row vector or a column vector. Now the next thing that we want to see is how can we create vectors using the colon operator. Okay, before that, let's create vectors by appending elements. So you can join elements to create another vector, or you can join existing vectors to create another vector. For example, let us create the vector E. Say for example, let us create the vector E. How do we want to create the vector E? So we want to create the vector E by, let's see, what is A is just 78, B is this vector. So I want to append A, B and C together and create a huge vector E. Okay, so how can we do that? So first I want the row vector or the scalar A space the row vector B and then the row vector C. You cannot specify a column vector here. Okay, so all of them must be row vectors, and we are joining them in the form of a row. Okay, so this is one row vector. When you are creating a row vector, you put a space or a comma between consecutive elements. Now here we don't have consecutive elements, here we have vectors. So A is 1 by 1, the dimension of vector A is 1 by 1, 78. Then we have B. So after 78 we will have 4, 5, 9, 7, 3, minus 7, and then C, 2, 0, minus 9, 4. You can add some other values with it. Say for example we want to add 15 with it, and then say minus 2. So it's going to be a huge vector E. When you press enter, all those vectors would be appended with each other. Append means एक दूसरे के साथ चिपका देना, लगा देना. ठीक है. So 78 के साथ हमने A was 78, फिर उसके साथ B vector लग गया. This is vector B, minus 7 तक. This is vector B. Then we have vector C. Vector C क्या है? 2, 0, minus 9 और 4 तक. This is vector C. ठीक है. और उसके बाद we have 15 and minus 2. ये जो दो values हमने साथ में append की. So you can create a vector by appending existing vectors. Now this was a row vector जो कि हमने create किया. Similarly, you can create a column vector by appending column vectors. Column vectors को एक दूसरे के ऊपर रख के जो है आप एक बड़ा column vector create कर सकते हैं. For example, right now we only have one column vector. Let us create another column vector, say F. How do we want to create F? Say सबसे पहले हम A is a scalar, तो ये कहीं पे fit आ जाता है. So first of all we want to have A. Now अभी मैं semicolon use कर रहा हूँ because मैंने next row में उसके नीचे फिर मैं रखना चाहता हूँ एक और column vector को. So that column vector is say D. ठीक है. उसके बाद मैं एक और column vector को रखना चाहता हूँ. Let us create that column vector. मेरे पास C एक row vector है. C is a row vector, but if I use this operator, this single quotation or single comma जो है, so this is the transpose operator. This operator here is the transpose operator. Let me show you that, and then once you are sure, तो फिर हम इसको use करेंगे. So first of all, say A, D, and then A, and then D. So हम क्या करते हैं? पहले A, फिर A के नीचे D column vector, फिर A, फिर उसके नीचे फिर D. So this would result in the column vector F, क्योंकि बड़ा सा column vector होगा. So we have A, then D, फिर A, फिर D. So we have created another column vector using existing column vectors, उनको append करके. ठीक है. So these are basically the different ways in which you can create a column vector.
or a row vector, or for that matter in general any vector. If you want to create any vector, these are the different ways in which you can do it, and they are useful. These are useful techniques जो कि बाद में आपको ज़्यादा complicated problem solve करने में आपकी helpful हो सकती हैं. अच्छा, we said something about the transpose operator. So this is say B, ठीक है, and if I say B and then apply this operator, this single quotation mark or inverted comma, ठीक है, so you can name it in different ways. So if you do it, so this basically would find out the transpose. Transpose क्या होता है? You convert rows into columns and columns into rows, ठीक है. So it is a row vector, so after the transpose it would become a column vector, ठीक है. So after the transpose operation it becomes the column vector. Now here we have F, ठीक है. अच्छा, so say हम F को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है. So we want to extend F. So F की पुरानी वैल्यू और साथ में उसके साथ हम कुछ नया अटैच करना चाहते हैं. So नया हम क्या अटैच करना चाहते हैं? We have the row vector say C. So C का transpose that would be a column vector. So this is the existing हमारा जो F vector है. अब उस F vector के साथ हम मज़ीद कुछ अटैच करना चाहते हैं और वो फिर F को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है. So the F would become F would change after this command. F जो है वो change हो जाएगा. F की जो पुरानी वैल्यू है उसके साथ एक नया टुकड़ा जो है वो हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है. So this is the old F. Old F कहाँ तक था? 4 तक, ठीक है. उसके बाद ये 2 0 -9 4. This is basically C transpose जो उसके साथ हमने अपेंड किया है, ठीक है. अच्छा, so this is how you can create vectors using existing vectors. So if you have existing vectors, you can combine them, append them with one another in different ways, and you can create new vectors. Achha, then we said something about this very important operator, the colon operator, ठीक है, colon operator. So this, you can use the colon operator as well to create new vectors. Achha, now let me clear the command window because that is too much text, and let me show you like what does the clear command does. This command clear. So this command basically clears the workspace window. So all the variables that you have created, so all those variables would be deleted, cleared from the RAM, ठीक है. So now you can start fresh, so you can reuse those names and everything. So we were talking about the colon operator, ठीक है. So what is the colon operator? So say for example we want to create a vector A, and we want to have, we know कि vector A की पहली उसमें वैल्यू क्या होगी और आखिरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है. So say for example we want this vector to have the first value 1 and the final value as 10. So you can create it like this: A is equal to 1 colon 10, ठीक है. So 1 is the starting value, 10 is the final value. इस वेक्टर की पहली वैल्यू 1 होगी, आखिरी वैल्यू 10 होगी. बीच में क्या वैल्यूज होंगी? So by default the step size is 1. So पहली वैल्यू 1, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4. जब 10 तक पहुंच जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है. So you can create a vector using the colon operator. So starting value is 1, the final value is 10. This is what we specified here. And by default the step size, यानी आप पहली वैल्यू से आप आखिरी वैल्यू तक पहुंचते किस तरह है? By incrementing the first value and then the second value, the third, the fourth. So increment की मिकदार क्या होती है? What is the amount of that increment? That is 1 by default. You can change that. आप इसको change भी कर सकते हैं. For example, you can say A is equal to 1 to 10, लेकिन step size is 3. So the first value would be 1, second would be 1 + 3 4, third would be 4 + 3 7, fourth would be 7 + 3 10, ठीक है.
तो आपके पास इस केस में 4 वैल्यूज होंगी, 1, 4, 7, 10, because we have changed the step size. So 1, 4, 7, 10. If you change the step size like s, step size को अगर आप 4 कर दें, so you're not going to get 10. अब पहली वैल्यू 1 होगी, फिर 5, फिर 9, ठीक है, उसके बाद फिर 13 मिलेगी. 13 is bigger than 10, so you'll stop at 9. So आपके पास 3 वैल्यूज का रो वेक्टर आएगा, 1, 5, 9, ठीक है. So starting value is 1, then 1 plus 4, 5, then 5 plus 4, 9, and if you do 9 plus 4, 13, that becomes bigger than 10. So you're not going to get 13. So यहीं पे आप रुक जाएंगे. So this is one way of creating a vector, and you can combine it. कैसे आप इसको combine कर सकते हैं? For example, we can have another vector b, और आप कह सकते हैं कि जी b, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं. b is this vector. You can say b is this vector, 1 to 10, step size of 2, and then say for example 3 to 15 with a step size of say for example 4, and then say for example minus 7 to 7 with a step size of say 5, say for example, ठीक है. So we are creating b, a row vector, by using the colon operator like multiple times. So this will result in one vector, row vector, उसके साथ फिर इस रो वेक्टर को अपेंड कर दिया जाएगा, फिर इस रो वेक्टर को अपेंड कर दिया जाएगा, एंड यू कैन टेल कि क्या होगा ये वेक्टर. सो इसमें पहली वैल्यू 1 होगी, फिर 3, 5, 9 तक, ठीक है, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा. सो 1, 3, 5, 7, 9, फिर हमारे पास 3, 7, 11, 15, ठीक है, एंड फिर हमारे पास होगी -7, -2, 3, एंड दैट्स इट, ठीक है. सो यू कैन वेरीफाई दिस इज 1, 3, 5, 7, 9, this is 3, 7, 11, 15, and this is -7, -2, 3, ठीक है. So you can use the colon operator to create a vector, and you can use multiple instances of the colon operator to create multiple vectors and append them to create a bigger vector, ठीक है. So all these variations are possible, so you should not be intimidated by these details. अगर आप ये कर सकते हैं, इसकी समझ आती है, so you should be able to understand, इसकी भी समझ आ जानी चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा. Now this thing gives you a row vector. ये जो ऑपरेशन है ना, it gives you a row vector, ठीक है. This always gives you a row vector. Let's see if you want to have a column vector. If you want this to be converted into a column vector, so you can do something like this, ठीक है. So 1, 5, 9 जो मुझे मिल रहा है ना रो वेक्टर, उस पे मैं फिर ये ट्रांसपोज ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ, so it would become a column vector. So ये 1, 5, 9 इस शक्ल में मुझे मिल जाएगा. जी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, यहाँ पे यू डोंट नीड स्क्वायर ब्रैकेट्स, यू डोंट नीड स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर. यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों मैंने लगाए, क्योंकि वी आर अपेंडिंग डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है. सो दिस वुड रिजल्ट इन वन वेक्टर, फिर उसके साथ हम इस वेक्टर को अपेंड करना चाहते हैं, फिर उसके साथ हम इस वेक्टर को अपेंड करना चाहते हैं. इफ यू राइट दिस विदाउट दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स, then that is a problem, ठीक है. So this is syntax error. You cannot do this. Square brackets आप तभी यूज करते हैं जब आप एक से ज्यादा वेक्टर्स को अपेंड कर रहे हैं, when you are specifying a list of values or a list of vectors, कि ये पहला वेक्टर है, फिर ये दूसरा वेक्टर है, फिर ये तीसरा वेक्टर है, इन तीनों को कंबाइन कर लें. So whenever you are specifying a list of values or a list of vectors, ठीक है, or a list of matrices for that matter, तो तब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, ठीक है. विदाउट दैट फिर वो इट वुड बी एन एरर. अच्छा, यहाँ पे
हमने अच्छा अगेन ये मैं यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस क्यों यूज़ किए? इफ़ आई डोंट यूज़ पैरेंथेसिस तो फिर क्या होगा? आई हैवंट ट्राइड इट, ठीक है, मैंने एहतियात के तौर पे पैरेंथेसिस यूज़ किए, बट आई सपोज दिस वुड गिव मी एन एरर, इट मे गिव मी एन एरर, ठीक है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ा. दिस ट्रांसपोज ऑपरेटर डिडंट वर्क बिकॉज द ट्रांसपोज ऑपरेटर अप्लाइड टू जस्ट 10. सो 10 का ट्रांसपोज ले भी लें तो वो 10 ही है, ठीक है, इट्स अ स्केलर. सो अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी आउटपुट को ये अप्लाई हो तो देन यू हैव टू यूज द पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस. अच्छा, क्या यहाँ पे हम लिस्ट यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स एज वेल, आई गेस दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, you can use both the parentheses and the square brackets in this particular case. इस केस में भी you can use this here, you can use the transpose operator and you can get a huge column vector, ठीक है, so उस तमाम को फिर वो अप्लाई करेगा. Okay, so this is the colon operator. Now the colon operator is important, you should know about it. तीन इसमें चीज़ें हैं. फर्स्ट इज द स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, देन द स्टॉप वैल्यू एंड देन द स्टेप साइज. द स्टेप साइज इज ऑप्शनल, इफ़ यू स्पेसिफाई इट तो वही स्टेप साइज होगा जो आपने स्पेसिफाई किया. इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई इट बाय डिफॉल्ट 1 वुड बी द स्टेप साइज, ठीक है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसकी समझ है तो आप फॉर लूप को आसानी से समझ लेते हैं. फॉर लूप में भी हम इसी कॉलन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है. तो फॉर लूप जो है वो फॉर लूप जो फॉर और एंड के बीच जो कोड है उसको उतनी मरतबा ही रिपीट करेगा जितनी मरतबा ये ये जो कॉलन ऑपरेटर जितनी वैल्यूज आपको प्रोड्यूस करके देता है. हर वैल्यू के लिए उस फॉर लूप को ये एक मरतबा से रिपीट करता है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस देन इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड द फॉर लूप एज वेल. अच्छा, नेक्स्ट इज द लिन स्पेस फंक्शन, द लीनियर स्पेस फंक्शन, ठीक है. You can create vectors using the linspace function as well, the linear space function. Let me clear the command window. You can clear the workspace as well. ठीक है, वो ऑन कर देगा चार्ज वो हो जाए ना. अच्छा, now how do you use the linear space function? कॉलन ऑपरेटर का क्या फ़ायदा है और लीनियर स्पेस का क्या फ़ायदा है? So colon operator में you know कि what initial value I have, what final value do I want, और step size मुझे क्या चाहिए. इसमें आपको ये नहीं पता होता कि मेरे पास वेक्टर जो पॉइंट्स जनरेट होंगे वो कितने होंगे. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि वेयर यू वांट कि मुझे 100 पॉइंट्स चाहिए या 200 पॉइंट्स चाहिए या 50 पॉइंट्स चाहिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुझे 50 पॉइंट्स चाहिए. So in that case you should be using the linear space function. It creates a linear space or it divides a line into a predefined number of slices. जितने आप चाहते हैं कि उसमें इतने पॉइंट्स हों तो उतने पॉइंट्स आपको जनरेट करके दे देता है, ठीक है. So how do you use the linear space function? Let me pause it. अच्छा, चलें, बिजली आ गई है. Okay, so attention please. So this is how you use the linear space function. So let's create another vector, say C, and we want to create C using the linear space function. So this is how you write the linear space function. lin for linear and then space, ठीक है. So it would create a linear space. So how would it create? You specify the initial value, the final value, and then you can specify the number of points that you want between the initial value and the final value, ठीक है. अच्छा, so if you don't, the number of points is optional. If you don't specify the number of points, so by default it would generate, I guess, 100 points, ठीक है. So say for example we have initial value हमारे पास 1 है, ठीक है, या इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 1 है,
and we don't specify the number of points, say we just say कि initial value 1 है, final value 0 है, final value 1 है. So this function, the linear space function, would create 100 points between 0 and 1. So vector c जो है उसका जो dimensions होंगे, that would be 1 by 100. ठीक है. So this is vector c, उसकी dimensions हैं 1 by 100. So between 0 and 1 it has created 100 points. Starting पहली जो value है that is 0. ठीक है. The first value is 0. फिर 0.01, 01, 0. ठीक है. फिर 02, 020, so on and so forth. So ये division, like how would this it divide the space, ये खुद डिटरमिन करता है. ठीक है. आप सिर्फ बता देते हैं कि मुझे 0 और 1 के बीच 100 पॉइंट्स चाहिए. ठीक है. So you specify the resolution. इसको हम कहते हैं resolution. Like you have starting value, final value, and then you specify the number of points that you want between those two values. So वो resolution है. ज़्यादा points चाहिए, high resolution होगी. कम points चाहिए तो low resolution होगी. ठीक है. I guess we tried something like that in the theory part of this course as well. और वो हमने किया था with trigonometric functions. So for example, say for example we want to plot the sine function या the cosine function. ठीक है. तो sine function और cosine function का हम से एक cycle plot करना चाहते हैं या दो cycles plot करना चाहते हैं from -2 pi to 2 pi. ठीक है. So say we want to generate angles theta की values generate करना चाहते हैं -2 pi से लेके +2 pi तक, and we want to vary the number of points कि उसमें हमें 100 values चाहिए, 50 values चाहिए, 30 values चाहिए. ठीक है. So you can change that. So वो आप कर सकते हैं using the linspace function. ठीक है. So linspace में initial value है -2 pi. हम -2 pi से start लेना चाहते हैं. वो आप कैसे specify करते हैं? -2 multiplied by pi. pi is a constant. ये पहले से predefined है. ठीक है. तो pi आप यूज करते हैं. This refers to the constant pi 3.1415 जो भी उसकी वैल्यू है. So हम -2 pi से लेके 2 pi तक पॉइंट्स जनरेट करना चाहते हैं. ठीक है. कितने पॉइंट्स जनरेट करना चाहते हैं? Say we want to have 10 points, say for example. ठीक है. So हम 10 एंगल्स की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं starting from -2 pi to 2 pi. ठीक है. तो ये और ये रेडियंस में. So -2 pi रेडियंस से 2 pi रेडियंस तक ये हमारे पास एंगल की वैल्यूज हैं. ठीक है. अब इसका हम we can calculate the sine of this angle. साइन कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स से उसको हम वेरिएबल s में स्टोर करते हैं. s इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. सो हम साइन ऑफ थीटा ये जो एंगल है ना, थीटा इज अ वेक्टर विच स्टोर्स द एंगल इन रेडियंस फ्रॉम -2 pi to 2 pi. सो उसका हम साइन मालूम करना चाहते हैं. सो साइन फंक्शन इस वेक्टर की हर एंगल का साइन कैलकुलेट करेगा. साइन ऑफ -6.28, साइन ऑफ -4.88, साइन ऑफ -3.49, ये वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको एक वेक्टर रिटर्न कर देगा. ठीक है. थीटा का साइज 1/10 है. साइन ऑफ थीटा एस जो वेक्टर होगा उसका भी साइज 1/10 होगा. ठीक है. सो दिस इज एस का भी साइज वही 1/10 है. ठीक है. और इसमें हर वैल्यू जो है ना वो साइन ऑफ थीटा है. नाउ दिस इज सम वेरी स्मॉल वैल्यू. इसको थियोरेटिकली इट शुड बी 0, बट दिस इज सम वेरी स्मॉल वैल्यू. अच्छा, नाउ लेट अस प्लॉट दिस फंक्शन. इसको प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है. अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्लॉट फंक्शन, इसलिए आई एम टेकिंग द लिबर्टी और इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. सो हाउ डू यूज द प्लॉट फंक्शन? सो यू सिंपली कॉल द कमांड प्लॉट. यू स्पेसिफाई कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा. सो एक्स एक्सिस पे थीटा होगा, एंगल इन रेडियंस. वाई एक्सिस पे साइन ऑफ थीटा होगा. ठीक है. and you press enter and then the plot command will generate the plot. ये प्लॉट अगर आप देखें ना, ये बड़ा सा ज़रा जिटरी किस्म का प्लॉट है. Why? Because -2 pi से 2 pi के बीच हमने एंगल की बहुत कम वैल्यूज ली हैं. 10 वैल्यूज ली हैं. सो वी ओनली हैव 10 पॉइंट्स. 10 पॉइंट्स पे हमारे पास ये प्लॉट जनरेट हो रहा है और उन पॉइंट्स पे साइन की वैल्यूज को इन्होंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है. सो इसलिए आपको ये ज़रा डिसकंटिन्यूस सा नजर आता है. इट डज नॉट लुक लाइक अ कंटिन्यूस फंक्शन.
ठीक है, और यहाँ पे वो रेजोल्यूशन का पॉइंट आ जाता है. दिस इज लो रेजोल्यूशन डेटा. दिस इज लो रेजोल्यूशन डेटा. यहाँ पे आपको डेटा कंटिन्यूस नजर नहीं आता. ठीक है. So if you want to make it more continuous, we need to increase the resolution, and that is easier with the linspace function. That is easier with the linspace function. So let's increase the resolution. तो थीटा हम क्या कर देते हैं, इसको से कर देते हैं 50. Let's create 50 points. और अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज कर रहा हूँ ताकि आउटपुट कमांड विंडो पे ना प्रिंट हो. ठीक है. तो आप देखें थीटा के बाद वो आउटपुट प्रिंट नहीं हुई, सेमीकोलन ने उस आउटपुट को सप्रेस कर दिया. ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड साइन ऑफ थीटा, और इसको भी मैं सेमीकोलन करके इसको जरा सप्रेस कर देता हूं. लेकिन यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं. थीटा इज 1/50. एस विच स्टोर साइन ऑफ थीटा, वो भी उसकी भी डायमेंशन 1/50 हैं. नाउ लेट्स प्लॉट दीज वैल्यूज, दीज टू वेक्टर्स. ठीक है. सो अब जरा कदरे कंटिन्यूस हमारे पास प्लॉट आ रहा है. इस प्लॉट को अगर आप बड़ा करके देखेंगे ना, तो मे बी इसमें भी आपको वो डिसकंटिन्यूटीज ज़रा सी नज़र आना शुरू हो जाएं करीब करीब से, अगर आप इसको देखेंगे. ठीक है. अच्छा, so this is the utility of the linspace function. ठीक है. ये डेमो, दिस वाज बेसिकली टू शो यू कि इस फंक्शन का फ़ायदा क्या है. तो इस फंक्शन का फ़ायदा ये है कि बिटवीन एनी टू गिवन एंड पॉइंट्स इट कैन जनरेट यू एज मैनी पॉइंट्स एज यू वांट. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे 1000 पॉइंट्स चाहिए बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, या 500 पॉइंट्स चाहिए, सो यू कैन डू दैट. -2π से 2π तक आपको 500 पॉइंट मिल जाएंगे. या आप इसको बढ़ा दें, साइकिल्स बढ़ा दें. दिस इज माइनस से 7π to 7π, और बीच में 500 आपके पास पॉइंट्स हैं. ठीक है. सो अब थीटा जो है ना 500 उसकी डायमेंशंस हैं. एस इज साइन ऑफ थीटा एंड देन लेट अस प्लॉट इट. So now we have more cycles of the sine function. Sine function के ज़्यादा cycles हमारे पास. इसका ग्राफिक्स इंजन थोड़ा सा स्लो है, तो इट टेक्स टाइम. इस पे मैंने डबल क्लिक किया है ताकि ये फुल उस पर नज़र आ जाए, लेकिन ये स्टिल टाइम ले रहा है. ठीक है. सो दिस लुक्स मोर कंटिन्यूस, क्योंकि ऑल्दो साइकिल ज़्यादा हैं लेकिन पॉइंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं. दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द linspace function. So you should know what a linspace function is and what does it do. अच्छा, next we wanted to talk, we have done this creating vectors by appending elements or existing vectors. Now this is also important. How do you access individual elements of a vector and how do you slice a vector? ठीक है. इससे क्या मुराद है? So let me first clear the command window and then I guess we don't need to clear the workspace window. So this is vector A, say A. If you want to access the entire vector A, simply say A. ठीक है. For example, we want to say कि A multiplied by 2. हम A को 2 से ज़रब देना चाहते हैं. ठीक है. So you can simply say A multiplied by 2. So this would multiply the entire vector A with 2. That means all the elements of vector A, they will be multiplied by 2. So you'll get 2, 10, 18. ठीक है. So if you want to access the entire vector, use the name of that vector. If you want to access a particular element of that vector, so then you need to specify which element do you need to access. So यहाँ पे आप देखें vector A को, let me clear the command window. This is vector A. Vector A has 3 elements. ठीक है. Now how can you access this element 1 or 5 or 9? ठीक है. So if you want to access the individual elements of
a vector, you need to use something that we call an index. जैसे आपके इस क्लास में क्लास नंबर, ये क्लास है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज सेकंड सेमेस्टर क्लास, लेट अस कॉल दिस क्लास एज द सेकंड सेमेस्टर क्लास, ठीक है. इफ आई से सेकंड सेमेस्टर क्लास तो पूरी क्लास से मैं मुखातिब हूँ. बट इफ आई वांट टू एड्रेस अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, सो देन आई मे से क्लास नंबर 1 या क्लास नंबर 10 या क्लास नंबर 15 या क्लास नंबर 30. सो आपके जो क्लास नंबर्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 1. देयर इज नो माइनस क्लास नंबर या 0 से नहीं स्टार्ट होते, 1 से आप स्टार्ट लेते हैं, ठीक है. और फिर जितनी आपकी क्लास की तादाद है तो आखिरी वाला जो क्लास नंबर है वो क्लास की तादाद अगर 35 है तो 35 होगा, 40 है तो 40 होगा. किसी भी वेक्टर में इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, यू कैन एक्सेस दोज इंडिविजुअल एलिमेंट्स यूजिंग अ नंबर, एन इंटीजर नंबर दैट वी कॉल एन इंडेक्स. इट इज सिमिलर टू योर क्लास नंबर. इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स एट 1. इंडेक्स की जो पहली वैल्यू होगी वो 1 है, आखिरी वैल्यू जो उस वेक्टर का साइज है वो उसकी आखिरी वैल्यू है, ठीक है. सो ये हमारे पास वेक्टर ए है. इस वेक्टर ए का जो पहला एलिमेंट है, चाहे रो वेक्टर हो, कॉलम वेक्टर हो, इट डजंट मैटर, इसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, दूसरा एलिमेंट 5 है, तीसरा एलिमेंट 9 है. अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 को एक्सेस करूं, सिर्फ 5 को, ठीक है, सो यू कैन एक्सेस 5 बाय स्पेसिफाइंग कि आई वांट वेक्टर ए का दूसरा एलिमेंट, मुझे वेक्टर ए का दूसरा एलिमेंट चाहिए. सो वेक्टर ए का दूसरा एलिमेंट क्या है? 5. तो 5 प्रिंट होगा. आप वेक्टर ए के दूसरे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं. आप कहते हैं कि जी मैं वेक्टर ए के दूसरे एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूं, ठीक है. कैसे चेंज करना चाहते हैं? यू कैन असाइन इट अ न्यू वैल्यू, यू कैन से कि इट इज -6, ठीक है. सो वेक्टर ए को हमने चेंज नहीं किया, वेक्टर ए के सेकंड एलिमेंट को चेंज किया बाय एक्सेसिंग द सेकंड एलिमेंट, उसका इंडेक्स बता के कि 2 नंबर जो दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 2, उसको आप चेंज करें, उसको ये नई वैल्यू असाइन करें. से फॉर एग्जांपल वी वांट टू चेंज द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 1, पहला जो एलिमेंट है हम उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है. सो वी वांट टू मेक इट 5 से. So you can do that. You can access individual element. You want to access the third element, say. ठीक है? So it is 9. This is vector A. पूरा vector अगर आप access करना चाहते हैं, so you use the name of the vector. If you want to access individual elements, you specify along with the name. Within these parentheses you specify the index of that element जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है. Let's take another vector. Say for example we have vector let us create a vector. Let me clear this command window and let us create a vector. Say A को ही modify कर लेते हैं. A is equal to 1 to स्टेप साइज चले 1 से नहीं स्टार्ट लेते. से वी स्टार्ट फ्रॉम -5, स्टेप साइज इज 2 एंड देन वी गो अप टिल 5, ठीक है. तो दिस इज वेक्टर ए, ठीक है. अच्छा, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट के व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वेक्टर ए के हमने तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 हम एक्सेस करना चाहते हैं. सो कैसे एक्सेस करेंगे? उनको एक्सेस करने के लिए यू वुड यूज द इंडेक्स. इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू आपको पता है कि वो 1 है, हमेशा 1 होगी. फाइनल वैल्यू क्या है? जितने ए में एलिमेंट्स हैं, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो उसकी फाइनल वैल्यू है. ए में कितने एलिमेंट्स हैं ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी हैव द लेंथ फंक्शन, लेंथ, ठीक है. सो इफ यू से लेंथ ऑफ ए, A is a vector, so it would return you कि A में कितने elements हैं. A can be a row vector, A can be a column vector, doesn't matter, ठीक है. So A has 6 elements. So A में जो है ना आपके पास जो maximum index की value है वो 6 है और minimum 1 है, ठीक है. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि if you are asked कि आप लिखें एक for loop और उस for loop में आप किसी vector के individual elements को access करें, because you want to do a certain set of operations on those elements, say for example, तो वो आप कैसे करेंगे? So then you would use the index. Index की starting value 1 है, final value उस vector में जितने elements हैं वो है.
सो हाउ वुड यू फाइंड आउट कि वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं? तो वेक्टर में जितने एलिमेंट्स हैं वो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग द लेंथ फंक्शन, ठीक है। सो 6th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? A6 5, ठीक है। 3rd एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 3 वो कौन सा है? -1, ठीक है। दिस इज एलिमेंट इंडेक्स 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, इफ आई से समथिंग लाइक दिस, 4 इज इक्वल टू अच्छा क्या होगा? 4 चेंज हो जाएगा। 4 इज 1, 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 4 उसको रिप्लेस कर दें विद एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 6। सो 6 वाला जो एलिमेंट है उसको कोई असर, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ कॉपी हो जाएगा इनटू दिस प्लेस। सो -5 -3 -1, 1 की जगह 5 आ गया। 5 3 5 5 अपनी जगह पे है और उसको हमने 1 की जगह भी कॉपी कर लिया। दिस इज हाउ यू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ a vector. You can access individual elements of a vector. You can access slices of a vector. आप वेक्टर के स्लाइसेस भी बना सकते हैं। यानी स्लाइस का क्या मतलब है? टुकड़ा। आपके पास डबल रोटी होती है, उसका एक स्लाइस, उसका एक टुकड़ा होता है। सो यू कैन टेक अ स्लाइस ऑफ अ वेक्टर। सो से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वेक्टर a, हम चाहते हैं कि उसका हम ये वाला स्लाइस ले लें, ये -5 और 1 वाला स्लाइस जो है, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स हमें चाहिए। सो हाउ कैन यू टेक दिस स्लाइस? सो अगेन आपने वेक्टर a से कुछ निकालना है। सो यू वुड से a क्या निकालना है? हमने एक स्लाइस लेना है, ठीक है। वो स्लाइस जो है वो ये वाला है, -1 5। -1 का इंडेक्स क्या है? 3, 5 का 4। सो यू कैन से 3 to 4 इंडेक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं मुझे सिर्फ वो चाहिए। वेक्टर a के 3 to 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट्स चाहिए। जब आप यहाँ पे कहते हैं ना a और 3, तो इसका मतलब है कि वेक्टर a का सिर्फ वो वाला इंडेक्स जो कि एट वो वाला एलिमेंट चाहिए जो कि एट इंडेक्स 3 है। यहाँ पे हम सिर्फ इंडेक्सेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि 3 से लेके 4 तक इंडेक्स वाले एलिमेंट्स वो हमें चाहिए, ठीक है। सो -1 5 हमें मिल जाता है। अच्छा, हम कहते हैं कि नहीं जी, वी वांट 2 से लेके 5 तक जो एलिमेंट्स हैं, यानी -3 -1 5 3, ये पूरा चंक, ये पूरा स्लाइस हमें चाहिए। सो यू कैन गेट दिस स्लाइस एज वेल, ठीक है। -3 -5 4 3। अगर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट एज वेल। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 to 4, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं इसको 0 0 कर दो, ठीक है। तो इसका क्या असर होगा? ये जो दो एलिमेंट्स है ना -1 5, ये 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वेक्टर a के एलिमेंट्स एट इंडेक्स नंबर 3 to 4, इनको आप ये वैल्यूज असाइन कर दें, ठीक है। तो एलिमेंट्स एट इंडेक्स नंबर 3 इज -1, एट इंडेक्स नंबर 4 इट इज 5, तो उनको ये वाली वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू टेक स्लाइसेस आउट ऑफ अ वेक्टर। नाउ वी कैन गो ऑन विद मैनी एग्जाम्पल्स। आप इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम वो कर सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, यही है। So you can try and work with different examples. Acha, so we have covered this part, this slicing and accessing individual elements, creating vectors का जो part है इसको हमने cover कर लिया. Now matrices, we'll go through that part slightly quickly because वही concepts हैं, लेकिन अब 2 dimensions में वो apply हो रहे हैं, along the x-axis rows and along the columns, दोनों dimensions में वो apply हो रहे हैं। So first of all, how do you create matrices? ठीक है। So let's create a matrix M. Now again, this is not something new, we have done it already, but how do you create a matrix? So first of all, you can specify the values directly, और उसमें भी उसूल वही सीधा साधा उसूल है। You specify either the rows, पहले row 1, फिर row 2, row 3,
or you can specify the columns, column number 1, column number 2, column number 3. ठीक है, you can do it both ways, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं. अच्छा, let's specify rows. बात है नहीं प्लीज, बोल तो मैं रहा हूँ, आप ब्रेक क्यों ले रहे हैं? ठीक है, so we don't have time for break. 11 o'clock आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी गालिबन, that's the time. So we only have 35 minutes. So ठीक है, पानी पी लें. अच्छा, या आप एज्यूम कर लें कि आपने मुंह पे पानी डाल दिया. So how do you create a matrix? So you specify rows. आपने रो वेक्टर क्रिएट करना सीख लिया. So let's specify the first row. So this is the first row. ठीक है, then we want to specify the second row. ठीक है, second row जो है ना, यूं समझ लें कि जब आप रो के एलिमेंट्स सेपरेट करते हैं तो यूज द स्पेस कैरेक्टर और द कॉमा कैरेक्टर. ठीक है, यानी जब आप सेपरेट कॉलम्स के लिए, नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर कॉलम नंबर 1, दिस इज द वैल्यू फॉर कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. कॉलम की वैल्यूज को जब आप सेपरेट करते हैं, यू सेपरेट देम विद अ स्पेस कैरेक्टर, और रोज को सेपरेट करने के लिए यूज द सेमी कॉलम. ठीक है, सो नाउ दिस इज द सेकंड रो. से फॉर एग्जांपल this is the third row. ठीक है, so you can specify multiple rows. पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो. ठीक है, now all these rows they would be stacked upon one another. पहली के नीचे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, and you would end up with a matrix. This is a matrix. ठीक है, you can create a matrix like this by specifying the values directly. अच्छा, आप कॉलम की वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. यू कैन स्पेसिफाई वैल्यूज फॉर कॉलम्स एज वेल. ठीक है, हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन डू इट दिस वे. से फॉर एग्जांपल वी वांट टू क्रिएट द मैट्रिक्स M. ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स M में क्या होगा? सो पहले हम कहते हैं जी वी शुड हैव कॉलम नंबर 1. सो कॉलम नंबर 1 हमारा 4 2 7 है ना. ठीक है, सो लेट मी राइट इट्स 4 2 7. So this is a row vector. मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, so this becomes a column vector. ठीक है, this becomes a column vector. So this is the first column. Then 5 1 1. ठीक है, 5 1 1. This is the second column. Row vector उसका ट्रांसपोज लिया. Then 6 5 0. ठीक है, रो वेक्टर उसका ट्रांसपोज लिया, एंड देन इन सबको लेट अस नेम इट डिफरेंटली. लेट अस कॉल इट एज M2. So you can create a matrix like this as well. You can specify the columns as well. Column vectors are specified. You can specify, you can create a matrix by specifying the row vectors. पहला row vector कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, और you can specify the column vectors. अब column vectors को जो है ना, उनको आपस में append करने के लिए we did not use the semicolon. रोज को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए आप सेमीकोलन यूज करते हैं. कॉलम्स को साइड बाय साइड रखने के लिए यू यूज अ स्पेस कैरेक्टर, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं. दिस इज वैल्यू फॉर कॉलम नंबर 1, वैल्यू फॉर कॉलम 2, वैल्यू फॉर कॉलम 3. बीच में सिर्फ स्पेस कैरेक्टर है. अगर आप नई रो डालना चाहते हैं तो फिर आप सेमीकोलन यूज करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे भी दिस इज सपोज टू बी अ कॉलम वेक्टर. सो वी हैव अ स्पेस कैरेक्टर, देन अनदर कॉलम वेक्टर, अ स्पेस कैरेक्टर, देन अनदर कॉलम वेक्टर्स. सो कॉलम वेक्टर्स को अगर लेफ्ट राइट एक दूसरे के रखना चाहते हैं, so this is how you can do it. ठीक है, अच्छा, now you can use the same thing. For example, here we have vector A. ये vector A है. Let me clear the command window. This is vector A. We have a vector. Using this vector we can create a matrix. Say for example, let me create M1. M1 मैं कैसे create करना चाहता हूँ. So A is a row vector. ठीक है, so A, फिर फॉर एग्जाम्पल 2 times A, another row vector. So पहले रो वेक्टर A, फिर रो वेक्टर A का डबल,
से फिर 3 टाइम्स ए, ठीक है। सो 3 रो वेक्टर्स मैं ऊपर तले रख रहा हूँ, ए 2 टाइम्स ए 3 टाइम्स ए, एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मैट्रिक्स M1, ठीक है। सो यू कैन डू इट दिस वे एज वेल। आप इस तरीके से भी एग्जिस्टिंग वेक्टर्स को लेके you can create a new matrix. If you have let's say let us create another matrix M3, ठीक है। अच्छा, M3 हम कैसे क्रिएट करेंगे? So let us take different slices of A, ठीक है। This is vector A, ये हमारे पास vector A है। सो उसके मुख्तलिफ स्लाइसेस लेके हम M3 क्रिएट करेंगे। सो पहला जो स्लाइस है ना वो ये वाला है। से फॉर एग्जांपल से वेक्टर A का पहला जो स्लाइस हम ले रहे हैं, से दैट इज फ्रॉम 1 to 3, से फॉर एग्जांपल। सो वेक्टर A का 1 to 3 ये वाला स्लाइस हम ले रहे हैं, ठीक है। एंड वी वांट इट, इसका ट्रांसपोज, इसको हम एज अ कॉलम वेक्टर ट्रीट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो स्लाइस हम लेंगे दैट वुड बी वेक्टर A का, से फॉर एग्जांपल 3 to 5, ये वाला स्लाइस लेते हैं, उसका ट्रांसपोज। एंड देन फिर हम वेक्टर A का ये वाला 4 to 6 वाला स्लाइस लेते हैं, उसका ट्रांसपोज, ठीक है। सो नाउ वी हैव 3 कॉलम वेक्टर्स। ये पहला वेक्टर A से हम ये वाला स्लाइस उठाते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इट बिकम्स अ कॉलम वेक्टर। फिर 3 to 5 ये वाला स्लाइस उठाते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। फिर 4 to 6 ये वाला स्लाइस उठाते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। और उनको हम साइड बाय साइड लगा रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। So this would give us this particular matrix, ठीक है। -5, -3, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 5, ठीक है। So you can use all these different combinations to create new matrices. और बहुत सारी जगहों पे आप इसी तरीके से नए matrices create कर रहे होते हैं। So you should understand कि ये कैसे आप करते हैं, how to access all these elements in different ways. अच्छा जी, so I hope like you understand कि how do we create matrices by appending rows and columns, ठीक है। We have done that, rows, columns दोनों। अच्छा, so before we go any further, let us do this part, accessing individual elements of a matrix, accessing rows and columns, accessing sub-matrices, and then we'll return to these special functions, ठीक है। So how do you access individual elements of a matrix? मैट्रिक्स में फिर यू हैव रोज एंड कॉलम्स। वेक्टर्स में यू आइदर हैव अ रो और अ कॉलम, तो एक ही इंडेक्स चलता है। यहाँ पे आपके पास रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं, तो यू हैव टू स्पेसिफाई। जिस तरह आप मैट्रिसेस में करते थे ना एफएससी में, या अभी भी अगर आप लीनियर अलजेब्रा का कोर्स लेते हैं एंड यू आर वर्किंग विद मैट्रिसेस, सो इफ यू वांट टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स यू स्पेसिफाई बोथ द रो एंड कॉलम इंडेक्स। तो इसका रो और कॉलम इंडेक्स क्या है? 1 1। इसका रो और कॉलम इंडेक्स है 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. So say for example we want to access this particular element, M3 का element at row number 2 column number 1, ठीक है। So this is row number 2 and this is column number 1. इन दोनों का intersection इस point पे होता है -3. So अगर आप ये कहते हैं तो you will get -3, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे? बाय स्पेसिफाइंग बोथ द रो एंड कॉलम इंडेक्स। रो एंड कॉलम इंडेक्स, रो 1 कॉलम 2 M3 का मैट्रिक्स, M3 का रो 1 कॉलम 2 यू विल गेट 0, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज इट, M3 का रो 1 कॉलम 2 पे 0 है फिलहाल, सो वी वांट टू चेंज इट, वी वांट टू मेक इट से 6, ठीक है। तो वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। रो 1 कॉलम 2 पे पहला जो एलिमेंट था वो 0 था, इस स्टेटमेंट के बाद हमने उसको चेंज कर दिया,
This is how you access individual elements. We have other matrices as well. We have matrix M1. Say this is M1. ठीक है? अच्छा, M1 का element at row number 2 and column number say 6. ये कौन सा element है? 10. ठीक है? So you get 10. You can change it as well. ठीक है? If you don't like it, you can make it say -9. So वो 10 की जगह अब -9 हो गया. अच्छा, this is how you access individual elements. You can access individual rows as well. Individual rows and columns वो भी आप access कर सकते हैं. How? Say for example M1 की हम first row access करना चाहते हैं. First row and all the columns in that row. So all the columns के लिए we specify colon operator. So this would return as the first row. पूरी row आपको मिल जाती है. ठीक है? अच्छा जी. Third row, you want to access the third row of M1. So you simply say row number 3 and all columns in row number 3. So you get row number 3. If you want to access a particular column, ठीक है? So then you need all rows in that column और column का number बता दें. So column का number हमें चाहिए, से second column हमें चाहिए. ये second column है, -3, -6, -9. ठीक है? -3, -6, -9. आपको से sixth column चाहिए. Sixth column क्या है? 5 - 9 15. 5 - 9 15. ये sixth column है. ठीक है? एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि किसी मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है, तो वेक्टर के लिए यू हैड द फंक्शन लेंथ. लेंथ क्या करता था? किसी रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर का साइज आपको रिटर्न करके उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि किसी मैट्रिक्स के डायमेंशंस क्या हैं, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स डज इट हैव, सो उसके लिए आपके पास ये फंक्शन है साइज. ठीक है? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, सो यू कैन यूज दिस फंक्शन size of M1. ठीक है? So it is 3 6, 3 rows 6 columns. 3 rows 6 columns. This is a vector. ये एक वेक्टर आपको मिल रहा है. उसमें दो एलिमेंट्स हैं, पहला नंबर ऑफ रोज, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स. Size of the matrix M, 3 rows 3 columns. फिर हमारे पास M2 था, 3 rows 3 columns. ठीक है? M1 का सबका मालूम कर लिया. अच्छा, so you know how to access individual rows and columns. Now इसको थोड़ा सा आप मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. This is say M3 या M3 को छोड़ें, M1. This is the matrix M1. ठीक है? So you can access individual rows and columns. You should be able to. वो हमने देख लिया. अच्छा, इसमें आखिरी एक जो है वो वेरिएशन, वो एक वेरिएशन तो नहीं है, बट यू कैन कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू अ वेक्टर एज वेल. लाइक एक मैट्रिक्स है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वेक्टर. फॉर एग्जांपल इफ आई से M1 एंड आई जस्ट प्रोवाइड दिस कॉलम हियर. ठीक है? मैं रो नहीं स्पेसिफाई करता, कॉलम नहीं स्पेसिफाई करता. आई जस्ट से M1 and within these parentheses I specify the colon operator. So ये क्या करेगा? ये M1 matrix को convert कर देगा into a vector, a row vector. ठीक है? If I press enter, sorry, a column vector. तो M1 जो matrix है वो पूरा का पूरा column vector में convert हो गया. और कैसे हो गया? So -5, -10, -15 first column, then second column, third column, fourth column, fifth column, sixth column, ऊपर चले stack हो गए. कॉलम नंबर 1, उसके नीचे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, 6. ठीक है? So this basically converts the entire matrix into one big column vector. अच्छा, अब हम sub matrices को, say for example we want to access sub matrices.
सब मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि विद इन अ ह्यूज मैट्रिक्स आप उसके कुछ स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू एक्सेस दिस सब मैट्रिक्स, ये जो तमाम जीरो जीरोज हैं, ठीक है, इस सब मैट्रिक्स में हमारे पास ये थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है, ठीक है. सो वी वांट टू एक्सेस दिस वन. से फॉर एग्जांपल, इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सो यू कैन से M1 के हम दो कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है. राइट नाउ वी कैन स्पेसिफाई इट दिस वे कि वी वांट टू एक्सेस टू स्पेसिफिक कॉलम्स ऑफ M1. तो उन कॉलम्स की तमाम रोज हम चाहते हैं और सिर्फ दो कॉलम्स चाहते हैं हम, ठीक है. वो दो कॉलम्स जो हैं, यू स्पेसिफाई दोज टू कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में. तो हम तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम ये चाहते हैं और इन दो कॉलम्स की तमाम रोज, वी वांट ऑल द रोज इन दीज टू कॉलम्स, ठीक है. तो इफ यू डू दिस, आपको ये दो कॉलम्स मिल जाएंगे, ये वाला सब मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है जी. अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल वी वांट टू एक्सेस दिस वन -60 -90, ठीक है, ये वाला सब मैट्रिक्स हमें चाहिए, -60 -90, ठीक है. तो ये कैसे आप, हाउ कैन यू गेट दिस वन? ना यहाँ पे अब तमाम रोज आपको नहीं चाहिए, यू वांट स्पेसिफिक रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है. तो हमें 2-3 रोज चाहिए. बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं. सो वी वांट रो नंबर 2 and 3, और ये कॉलम्स कौन सी हैं? वो भी 2 और 3 हैं. कॉलम्स आल्सो दे आर 2 and 3, ठीक है. -60 -90, हमें ये वाला चाहिए, ठीक है. सो 2 and 3, रो नंबर 2 3, कॉलम नंबर 2 3, इनका जहां पे इंटरसेक्शन होगा इट इज दिस पार्ट, ठीक है. सो ये -60 -90 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है. इफ यू वांट टू एक्सेस फॉर एग्जांपल दिस पार्ट 3 5 6 -9, दिस सब मैट्रिक्स, उसके लिए आप क्या करेंगे? 3 5 6 -9 या 3 5 9 15, हमें ये वाला चाहिए, 3 5 9 15. अच्छा, कौन सी रोज हैं? 1 और 3, और कौन से कॉलम्स हैं? 5 6. सो रो नंबर 1 और रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 6 ये हमें चाहिए. सो यू गेट 3 5 9 15, 3 5 9 15, ठीक है. एक सेकेंड. अच्छा जी, लेट मी क्लियर दिस कमांड विंडो. दिस इज M3, सॉरी CLC M1. अच्छा जी, क्या चाहिए? अच्छा, 3 9 5 और -9, नहीं, दिस इज नॉट अ सब मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन. सो सब मैट्रिक्स में लाइक वो आपने वो जो इट शुड बी रेक्टेंगुलर, ठीक है. नाउ दिस डज नॉट रिमेन रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर है इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट वो जो इंडेक्सेस है ना वो इसको अजीब सा बना देता है. हाँ, बनता तो है, लेकिन जो इंडेक्सेस हैं उनकी आप वो नहीं कर सकते. यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल द रोज, तो वो गलत हो जाएगा सारा. एनी अदर कॉम्बिनेशन? और लेट मी आस्क यू कि इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, से फॉर एग्जांपल Gee, what are we going to get here?
-5, -15, 5, 15. So we are accessing the corners. ये जो rectangular matrix है इसके corner पे जो elements हैं, these are row indexes, row number 1 और row number 3, and these are column indexes, column number 1, column number 6. इनका intersection जिन points पे होता है. So -5, -15, 5, 15. And if you can access something, you can change it as well. ठीक है. एक्सेस से मुराद सिर्फ रीड ओनली एक्सेस नहीं है कि आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज वेल, उसको चेंज भी कर सकते हैं. तो से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है आई. इट जनरेट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट जनरेट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन सा होता है? डायगोनल पे यू हैव वंस, ऑफ डायगोनल यू हैव जीरोस. सो आई जो है फॉर एग्जाम्पल मैं, और इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इफ आई से I2, so it would generate a square matrix of order 2 by 2, an identity matrix of order 2 by 2, sorry. So वो होगा 1 0 0 1, 1 0 0 1. फर्स्ट रो में 1 0, सेकेंड रो में 0 1. हम ये असाइन कर रहे हैं टू दिस पर्टिकुलर सब मैट्रिक्स. इसका मतलब ये है कि M1 में ये एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. ठीक है. So 1 0 0 1, and just like जिस तरह से हम वेक्टर्स को अपेंड कर सकते हैं ना, इसी तरह आप मैट्रिसेस को भी अपेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला. अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि लाइक यू, इट इज़ ईजियर फॉर यू परहैप्स टू अंडरस्टैंड कि इसका आउटपुट क्या होगा. हम रोज नंबर 1, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 6 पे जो एलिमेंट्स हैं हम उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं. सो इसने आपको ये एलिमेंट्स रिटर्न करके दिए, -5, -15, 15, ये जो कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स हैं. सो द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक वाज कि ये एलिमेंट्स आपने इस वक्त रीड किए, एक्सेस किए. यू कैन चेंज दीज एलिमेंट्स एज वेल. अगर आप यही जो एक्सप्रेशन है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कर दें और राइट हैंड साइड पे यू स्पेसिफाई न्यू वैल्यूज फॉर दीज एलिमेंट्स, सो यू कैन चेंज दीज एलिमेंट्स, प्रिसाइजली दीज एलिमेंट्स. बाकी सारे एलिमेंट्स उसी तरह रहेंगे, सिर्फ इन एलिमेंट्स को आप चेंज कर दें. तो ये एलिमेंट्स जो है ना, ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, बल्कि यहाँ से ही पता चल रहा है आप 2 रोज और 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू बी 2 by 2 साइज. तो मैं 2 by 2 साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ. I2, I इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये 2 रोज 2 कॉलम्स वाला 1 0 0 1 वो जनरेट कर देगा. ये मैट्रिक्स मैं असाइन कर रहा हूँ टू दिस पर्टिकुलर सब मैट्रिक्स. तो ये जो वैल्यूज हैं कॉर्नर्स पे ये मॉडिफाई हो जाएंगे. ठीक है. दैट इज व्हाट वी डिड हियर. अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक वाज के यू कैन अपेंड मैट्रिसेस एज वेल. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज वी वांट टू चेंज मैट्रिक्स M, और मैट्रिक्स M को हम कैसे चेंज करना चाहते हैं? हम मैट्रिक्स M1 और उसके बाद मैट्रिक्स M1 के ऊपर नीचे फिर मैट्रिक्स M1 को दोबारा रखना चाहते हैं से, लेकिन उसका डबल रखना चाहते हैं, 2 times M1. ठीक है. और उसके बाद से वी वांट टू हैव M1 या 3 times M1 plus 5, say for example. This is what we want. So we are going to create a very huge matrix. उसमें पहले जो है ना आपके पास M1 मैट्रिक्स होगा, फिर उसके नीचे M1 का डबल, फिर उसके नीचे M1 का 3 times plus 5. ठीक है. यानी हर एलिमेंट ऑफ M1 multiplied by 3 and added 5 to it. So this would be a very huge matrix. ये आ गया पहला M1. ठीक है. Then we have 2 times M1. Then we have 3 times M1 plus 5. ठीक है. So you can append matrices as well. अच्छा, अब अगर मैं M को ज़रा मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, let us make even a bigger matrix. ठीक है. कैसे? So M और उसके साइड में फिर M लगा देता हूँ, या इसको 2 times M कर दें. So M और राइट साइड पे 2 times M. जब आप सेमी कॉलन यूज करते हैं तो ऊपर तले चीज़ों को रख रहे होते हैं, स्टैक कर रहे होते हैं. जब आप स्पेस यूज करते हैं तो लेफ्ट राइट आप चीज़ों को रख रहे होते हैं. ठीक है. सो अब M वुड बिकम इवन बिगर. ठीक है. सो वी हैव M, this was M,
दिस हियर, ठीक है, 8 तक, सॉरी दिस वाज m, और फिर 2 टाइम्स m, ठीक है, 2 minus 20, 0 minus 40 minus 50, 10, ठीक है. So I guess like we have covered these parts, ये तमाम हम cover कर चुके हैं. So the only part that remains now is these special functions and these element wise operations. Special functions में भी हमने I function को देख लिया, लेकिन let's go through these functions one by one, ठीक है. Let me clear the workspace as well. अच्छा, so special functions में पहला, if you want to generate a vector or matrices with all zeros, बाज़ औक़ात there may be a requirement जहाँ पे आपको तमाम zeros values चाहिए, so you can use the zeros function, zeros, और यहाँ पे you specify the order, सिर्फ order specify करते हैं. अगर आपको vector चाहिए, से row vector चाहिए, so 1 by 10, so 10 zeros. column vector चाहिए, ठीक है, so या तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दें, और या यहाँ पे 10 by 1 कर दें, 10 by 1 या 5 by 1. So this would be a column vector with all zeros, 5 zeros. अगर आपको matrix चाहिए, so just change the order 5 by 5, तो zeros का एक matrix आपको मिल जाएगा. You can create a matrix of ones, all ones, ठीक है, ones 5 by 5 से, या 4 by 4, ठीक है. अच्छा, तो इसमें all ones हैं. You can have a vector, this is a column vector of all ones, this is, you can have a row vector of all ones, ठीक है. So ones allows you to create a vector or matrix with all ones. Zeros allows you to create a vector or matrix with all zeros, ठीक है. These are useful functions. बाज़ औक़ात आपको ये चाहिए होते हैं, बजाय इसके कि आप कोई matrix पहले create करें फिर उसमें zeros copy करें. So you can create a vector or matrix of all zeros or ones. इससे ज़्यादा फिर और interesting functions भी हैं, and one of those interesting functions is the rand function, ठीक है. So we have the rand function, simple rand function. This function generates random values between 0 and 1. 0 और 1 के बीच random values generate करता है. Random values means those values are not determined by any formula, they are randomly chosen. जैसे कोई अंधा बंदा जो है ना, किसी बॉक्स में से कोई पर्ची निकालता है, ठीक है, अंधा ना भी हो तो बस कोई बंदा किसी बॉक्स में से कोई पर्ची निकालता है, उसे पता नहीं है कि उस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, एंड वंस वो पर्ची निकाल ले तो उस पर्ची को वो फेंक देता है, फिर बॉक्स में से दूसरी पर्ची निकालता है, तो उस जो पहला नंबर निकला है उसकी रेपिटेशन के चांसेस नहीं होते, ठीक है. सो थ्योरेटिकली, इन प्रिंसिपल, रैंडम नंबर्स आर नंबर्स व्हिच नेवर रिपीट देमसेल्व्स. So you can generate random numbers between 0 and 1. Again, you specify the dimensions. आपको एक row vector चाहिए random values का. So you can have a row vector with 5 elements. आपको एक column vector चाहिए random values का. Say 10 random values आपको चाहिए. So you can have a column vector of random values. ठीक है? You can have a matrix, ठीक है, आपको एक matrix चाहिए पूरा random values का. You can generate that matrix of random values. Now we are going to use these functions. ये जो rand function है और एक और function है random integer, rand I. So ये दोनों functions हमने use करने हैं. So you should be familiar with it कि इसका मतलब क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है. So this is basically a 5 by 5 matrix of random values. 25 random values हैं. तमाम वैल्यूज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, ठीक है. अगर आप सब लोग, ये आपको मैं कहूँ ना कि यूज द रैंडम फंक्शन, आप सब लोगों की आउटपुट मुख्तलिफ होनी चाहिए. इफ द आउटपुट इज द सेम, दैट मीन्स यू हैव कॉपीड, ठीक है. सो दैट इज वन वे फॉर मी टू इंश्योर कि आप जो है ना एक दूसरे से कॉपी नहीं करते. एंड इफ यू स्टार्ट विद रैंडम वेक्टर और रैंडम मैट्रिक्स, तो उसके बाद तमाम वैल्यूज जो हैं वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जिस तरह कि आपने इनिशियल वैल्यूज से स्टार्ट किया. द नेक्स्ट फंक्शन दैट यू वांट टू टॉक अबाउट इज द rand I फंक्शन.
रैंडम इंटीजर फंक्शन। ये जो रैंडम वैल्यूज है ना, ये डबल वैल्यूज हैं, सॉरी रियल वैल्यूज हैं, यानी इसमें ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, 0 और 1 के बीच हैं, तो ये डेफिनेटली फिर रियल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। दे आर ऑल लेस देन 1, ये तमाम वैल्यूज 1 से छोटी हैं, 0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी हैं, तो इसका मतलब है दीज आर फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज। अगर आपको इंटीजर वैल्यूज चाहिए और रैंडम चाहिए तो देन यू कैन यूज द रैंड आई फंक्शन, रैंडम इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सो रैंडम इंटीजर फंक्शन में आप 3 चीजें स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट यू स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू जो आपको चाहिए, ठीक है। सो से मुझे रैंडम वैल्यूज चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू से 6 या 10 या 100, या मुझे सिर्फ मुझे 6 तक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, 1 to 6 या 0 to 6 ये पता चल जाएगा। सो यू स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट, एंड देन यू स्पेसिफाई कितनी वैल्यूज आपको चाहिए, रो वेक्टर चाहिए, कॉलम वेक्टर चाहिए या मैट्रिक्स चाहिए। सो से फॉर एग्जांपल हमें 5 by 5 का मैट्रिक्स चाहिए, तो ये फंक्शन जो है 5 by 5 का एक मैट्रिक्स जनरेट करेगा और उसमें रैंडम वैल्यूज होंगी जो कि इंटीजर वैल्यूज होंगी। मैक्सिमम जो इंटीजर वैल्यू होगी दैट वुड बी 6, मिनिमम वुड बी परहैप्स इट वुड बी आइदर 0 और 1, मुझे कंफर्म नहीं है, भूल जाता है, बट लेट्स सी, आई गेस इट इज 1, मिनिमम वैल्यू 1 से लेके 6 तक ये वैल्यूज आपको जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। तो अगर आप कंप्यूटर्स को हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर सिमुलेशन पर्पसेस, ठीक है। अगर आपने लूडो खेलनी है, लूडो की गेम बनानी है, अब वो जो कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन पे आप लूडो खेलते हैं, उसमें व्हेन यू थ्रो जो छक्का होता है उसको जब आप फेंकते हैं तो वो आउटकम कैसे वो डिटरमिन करता है, सो वो रैंडम नंबर्स जनरेट करके ही करता है, ठीक है। वो रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 1 and 6, अगर 1 है तो वो लूडो पे वो 1 की तस्वीर लोड कर लेता है, अगर 6 है तो वो छक्के वाली तस्वीर लोड कर लेगा, ठीक है। सो यू थिंक कि शायद वो रोल को सिमुलेट कर रहा है, बट वो बेसिकली आउटकम को सिमुलेट करता है। सिमिलरली अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो टॉस जो है ना वो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड्स और टेल्स। सो इफ यू कैन जनरेट 2 वैल्यूज रैंडमली 1 से 2, 1 आया तो हेड्स, 2 आया तो टेल्स, सो यू कैन सिमुलेट द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक से फॉर एग्जांपल हमें 100 तक की वैल्यूज चाहिए, ठीक है, सो यू कैन स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू 100, सो 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज आपको जनरेट होंगी। इस फंक्शन को आप जब भी एग्जीक्यूट करेंगे आपको नई वैल्यूज मिलेंगी, आउटपुट वुड ऑलवेज बी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन वो 100 से कम होंगी, मैक्सिमम वैल्यू वुड बी बिटवीन 1 and 100 और डायमेंशन उसके 5 by 5 होंगे, लेकिन वैल्यूज हमेशा मुख्तलिफ होंगी, ठीक है, वैल्यूज हमेशा मुख्तलिफ होंगी। ये जो कॉम्बिनेशन है 25 वैल्यूज का, ये कभी रिपीट नहीं होगा थियोरेटिकली, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहां तो आपने सिंपल मैक्सिमम स्पेसिफाई की, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू एज वेल, ठीक है। आपको चाहिए फॉर एग्जांपल वैल्यूज -5 से लेके 5 तक, सो यू कैन स्पेसिफाई कि मिनिमम -5, मैक्सिमम 5। जब भी आप एक से ज्यादा वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं ना तो यू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, आप उनको स्पेसिफाई करते हैं विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यू स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलें, ठीक है, आई गेस दैट्स इट। देयर इज वन थिंग दैट इज स्टिल हियर, element wise operations, we'll talk about that in the next session, but this is what we have, ठीक है। क्वाइट प्लीज, वो मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं आऊँगा और लैब जो है ना वो होगी, आप हो या ना हो, ठीक है, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, so this session is being recorded and I hope like it would be recorded, so once it is recorded I'll upload it and then I'll share the link with the CR so you can revisit this session, ठीक है। अच्छा, ये काम जो हमने लैब में किए हैं ये तो आपने करने हैं एज अ प्रैक्टिस, फिर मैं आपको कुछ टास्क असाइन कर दूंगा, वो भी मैं आपके CR साहब के साथ शेयर कर लूँगा, तो देन यू हैव टू डू दोज टास्क एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर लैब रिपोर्ट। मैं आपको बता दूंगा कि लैब रिपोर्ट में क्या क्या फिर आपने डालना है, ठीक है।
बट इन एनी केस वट एवर वी डिड यू हैव टू एक्सप्लेन कि इस लैब में हमने क्या किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें वहाँ आपने बतानी है कि ये कैसे करनी है, ठीक है, रिपोर्ट में आपने ये मेंशन करनी है, ठीक है।